Hello students. So today in this video we'll discuss the directive influence of the alkyl group. And here I will discuss the directive influence of alkyl group by taking an example of the methyl group, CH3 group. See, remember that our alkyl group, this remains ortho-para directing. This is ortho-para directing. It means if in the ring already there is an alkyl group is there, so this will direct the new incoming group to form bond at ortho and para position. See, suppose this is an alkyl benzene. Here this R group may be CH3, maybe C2H5, anyone. And if this undergoes a chlorination, so what happens? This already existed alkyl group will direct the new halogen atom to form bond at ortho and para position. Is it clear? And we will get the ortho and para substituted product. But see one thing, as we know in mostly in all the ortho-para directing groups like the OH, NH2, OR, here R group is taken as CH3, etc. In these all, the first atom is having a lone pair. Is it clear? और ये जो lone pair है first atom पे, that participates in the resonance, and that's why ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो ग्रुप होते हैं, ये रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, स्पेशली एट पोजीशन 2, 4 और 6 पर, और इसलिए अटैक जो है 2, 4 और 6 पर होता है. एंड 2, 6 ऑर्थो पोजीशन होती है और आइडेंटिकल है, और ये जो 4 पोजीशन है 1, 4 ये पैरा पोजीशन होती है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट्स द ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट. दिस वन इज ऑर्थो substituted product, and this one is para substituted product. Is it clear? But see, in case of the alkyl benzene, I am taking here methyl group as an alkyl group. Okay? Here at this carbon there is no lone pair. Then how this alkyl group will increase the electron density at position 2, 4 and 6. So this can be explained or understood by a hyperconjugation. So the ortho-para directing effect of the CH3 group, this can be explained by, there is one concept, it is hyperconjugation. So we may explain the ortho-para directive influence of CH3 or any other alkyl group by hyperconjugation. अब hyperconjugation क्या चीज़ है? Actually hyperconjugation में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हो के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एडजेसेंट अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं.
मीन्स यहाँ पर देखिए ये कार्बन जिसने 1, 2 और 3, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो ये वाला कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि ये रिंग एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है ये। तो यहाँ पर कार्बन जिस पर ये डबल बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये देख कार्बन जो है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज्ड रहते हैं। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ये CH बॉन्ड के ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये दीज आर द सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जो कि लोकलाइज्ड है। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, ठीक है, ये डिलोकलाइज्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के जो ये सिग्मा CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुद डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ बेंजीन में रेजोनेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खुद भी आप ऐसे कह सकते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे एंड एज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हियर दिस कार्बन विल बिकम पेंटावैलेंट, सो साइमल्टेनियसली दीज 2 पाइटॉन्स विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कार्बन और आपको अनदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिस कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड will form in between the ring and the carbon. As these 2 electrons shifted here, this will get here H plus. Now stress comes at this position. So now in order to minimize the stress, ये जो negative charge है ये पूरी ring में spread करेगा. These 2 electrons will shift in the forward direction. Now these pi electron will shift to the next carbon. We'll get the another resonating structure. Here now double bond, as these 2 electrons shifted here, at this place there will be a double bond. This position will become electron rich and negative charge. Here there's the double bond C and at this carbon there's the H plus. Again here in order to minimize the stress, these 2 electrons shifted in forward direction. Now the pi electrons of this bond shifted to the next carbon and we obtains the another resonating structure. Here there's the double bond. As these 2 electrons shifted here, double bond will form here. This carbon will become electron rich, negative charged, and here there's the double bond C and H and H plus. Now these 2 electrons shifted in forward direction and these 2 pi electrons will come in between the carbon and H plus and we will get another resonating structures. Here there's a double bond, there was a double bond. As these 2 electrons shifted at this place, double bond will form. And since the pi electrons of this bond shifted in between the carbon and H plus, so only single bond will left here and here there's the CS3. Is it clear? So these are the what possible resonating structures for this methyl. This one is a methyl benzene, which may be called as toluene.
See, here you will notice that in the resonating structures there is no bond. कुछ स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर कार्बन और H प्लस के बीच में बॉन्ड नहीं है, और that's why this hyperconjugation is also called this hyperconjugation is also called no bond resonance. So this is the hyperconjugation, or you may call no bond resonance in toluene. Is it clear? Actual structure is none of this. Actual structure इन सब के बीच का है, और here you will find that if there's the CH3 group is here, so this इस कार्बन को आप फर्स्ट कार्बन कहेंगे, then this will be second, third, fourth, fifth and sixth. Now if we will analyze these no bond resonating structures, तो हम पाते हैं कि पोजीशन 2, 4 और 6 पर, यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इन दीज 3 साइड्स जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो प्रेफरेबली 2, 4 और 6 पे अटैक करेगा. मीन्स हियर these sides, they becomes susceptible for electrophilic attack. मीन्स अब जो नया आएगा ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो प्रेफरेबली पोजीशन या तो 2, 6 पे अटैक, 2, 4 और 6 पे अटैक करेगा. और क्योंकि आपको पता है बेटा, सिंस द पोजीशन 1, 2 and 1, 6 these are identical. This is already explained in the previous video. और इस पोजीशन को चाहे 1, 2 पे बॉन्ड बनाए या 6 पे जुड़े 1, 6 बॉन्ड पे बॉन्ड बनाए, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन. और आइदर otherwise it will form bond at position and it will form, not otherwise it will form bond at position 2, 4 and 6. So if it forms bond at 2, 6 we will get ortho product, and if the incoming electrophile forms bond at position 4, so that one we will get the para product, because the position 1, 4 this is called para position. Is it clear? That's why अगर यहाँ पर रिंग पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और दिस अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल फॉर्म बॉन्ड आइदर एट पोजीशन 2, 6, तो देन इन दैट केस यू विल गेट द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. और अगर वो 4 पे बॉन्ड बना रहा है तो विल गेट द पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. तो in this case, as the presence of the CH3 group increases the density at position 2, 4 and 6, so attack will be possible only at ortho and para position, and that's why the CH3 group is ortho-para directing. Is it clear? One thing more, usually it is noticed that this para product will be formed as a major product. This one will form as a minor product.
इज इट क्लियर? व्हाई सो? देखो यहाँ पर दिस CH3 ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप. सो बल्की ग्रुप है तो दिस विल स्टीरिकली हिंडर द अटैक एट द एडजेसेंट साइट्स. मीन्स 2 और पोजीशन 2 और 6 पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को थोड़ा सा हिंडर करेगा ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर. मीन्स ऑलरेडी बल्की ग्रुप है तो यहाँ पर उनको अटैक को थोड़ा सा हिंडर करेगा. वाइल पोजीशन 4 पर जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो कन्वीनियंटली हो जाएगा. दैट्स वाई द पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. इज इट क्लियर?